guys, myself Piyush Goel, Company Secretary from Jaipur. In this video, we are going to discuss about the process of incorporation of the LLP. In this video, we will cover how to incorporate the company, how to incorporate the LLP, what are the process for incorporation of the LLP, and how much time it will take, documentation required, right? So we will cover all the aspect for incorporation of the LLP. we will discuss we will discuss also the problem which are arised during the incorporation of the LLP, right? Or if you are planning to incorporate a LLP, it is a very good option for doing the business, because in comparison to the company, the compliances are very less, and it helps for the small business owners, because in the LLP the compliance level in the Companies Act, in the IBC, in the ROC work are very less in compare to the company. Or the audit of the LLP is not mandatory if the turnover of the LLP is below the 40 lakh rupees, right? Or this is a very beneficial for the professionals like CA, CS, advocates, and other professionals, because uh, this will provide the benefit of both partnership firm and the company. So let's start the video. And first of all, LLP works like completely in the manner in which company works. Like the LLP has a separate legal entity, right? Or in addition to that, any changes in the partner's LLP shall not affect it, will continue until the dissolution of the LLP. LLP has laser compliance of annual filings, right? And in addition to that, when the LLP is incorporated, you दो जो आपका LLP नाम है उसके पीछे LLP वर्ड लगाना मैंडेटरी है। LLP का परपेचुअल सक्सेशन होता है, हमने बात करी है अभी। और इसका जो पार्टनर होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं। अगर जो है कोई भी ऑब्लिगेशन अगर LLP बाय अराइज होती है इन फ्यूचर, उसके लिए सोलली जितनी भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है वो केवल उसके लिए लाइबल है, ना कि पूरी लाइबिलिटीज के लिए। अब हम बात कर रहे हैं LLP इनकॉर्पोरेशन के लिए। LLP इनकॉर्पोरेशन करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिक्वायर्ड है, जिसमें से एक इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। रिटर्न कंसेंट चाहिए होगी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की फॉर्म LLP 9 विदिन 30 days of such appointment. Every designated partner shall have DPIN. जो LLP है उसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए जहाँ पर सारे कम्युनिकेशन मिल सके, गवर्नमेंट के या अदर कोई भी कम्युनिकेशन आता है, राइट? तो वो सारे कम्युनिकेशन रिसीव करने के लिए एक ऑफिस होना जरूरी है। इसके अलावा प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपके पास डिजिटल सिग्नेचर आपको रेडी कराने होंगे। डिजिटल सिग्नेचर जो है जहाँ से आप इनकॉर्पोरेशन कराओगे